So this is the activity we are carrying under the IIC cell, which is the Institute Innovation Counseling cell of our ARMIET, and it is the AICT mandatory activity. And under that activity, our first session we are arranging as a my story about motivational session by successful innovator, as our speaker Dr. Rakesh Ranjan sir. He done his PhD from the IIT Dhanabad and MTech from IIT Kharagpur. So the name itself explains about its value. But currently he is as a founder and director of Yantrino Private Limited, one of the reputed company. And he is also the associated with a Niti Aayog, Government of India, and as a consultant for incubation of startup. You all are, as an engineering student, known about the understanding of importance of incubation, starters, entrepreneurships, and all other activities. How his journey is, how he start his business initially, and how it converts into a profitable business, and how this company revenue reaches up to the 5 lakhs per month, and how his journey is, that all he is going to discuss with us. So Dr. Ranjan sir, you are there with us on the behalf of ARMIET. I will welcome you for the session. And for today's session, along with our ARMIET staff and students, our Dean of Academics is also with us. So all the journey will be there. My request to you, please start with your session, and I'm handing the session to you. Welcome, sir. Please. Thank you, ma'am. Thank you very much for inviting me as a speaker over here to guide your students and the other young entrepreneurs. The journey of a startup is simply not a journey like traveling from one destination to other destinations. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just I would like to share my screen. Yeah. So first, I hope the students should know what is called a startup. What is a startup basically? One should know very clearly. And how the government of India is defining this term, a startup. First, we have the perception about the startups and what kind of definition they have in the directory of government of India. So both are entirely sometimes different, totally different. So you should know, and why one should know the definition of a startup. Since you have to perceive the startup as guidelines given by the government of India, because you need in further some fundings, angel investors, or big venture capitalists. So you have to connect so many people in the journey. So one should know very clearly what is a startup defined by the government of India, not ourselves. Sometimes what happens, we take up any kinds of businesses and we say, this is my startup. And when you go to the government of India, please give me some grant, 10 lakhs, 20 lakhs, and 30 lakhs. And after doing all the documentation process, you will be find that I am not a startup, so I could not get a fund from the government of India. So if you want to start your journey after graduations or in the mid of the graduations also, you should know very clearly what is called a startup in the dictionary of government of India, Atal Innovation Missions under Niti Aayog. So some terminology I would like to highlight to your graduate students. They must knowing about the startups. So the government is defining a startup is an innovative ideas. So what is innovative ideas and what is the difference in between the traditional businesses and
startups. So there is a major differences in between the traditional businesses. Traditional businesses like any shop of grocery, any shop of stationery, any malls, cinema halls, some big businesses also, petroleums, cements, and other infrastructure sectors. All can be put under the umbrella of traditional businesses. They have the limited sky to fly. They cannot fly above certain limits. But innovation, if there is a great kind of innovations, and the innovation can fulfill the gaps that the persons or the scholars, any kinds. If you are picking a gap of any sector, there are so many sectors, you cannot pick the all gaps. Gaps is infinite kinds of gaps. Farmers, they are different kinds of gap they are suffering, the farming sector. Some other gaps in the medicinal sectors, some other in the artificial intelligence sector. So you have to study deep and deep, so many papers, so many reviews, economics times, other newspapers, and a startup news also, to first find out the gap. Where should I put my legs to succeed in the further destinations? That is the major thing. If you are putting your leg in the wrong place, your journey may finish very shortly. So a startup means very clearly in the dictionary of government, it's an innovation kind of thing. So government is not supporting funds for the traditional businesses. That's very clear. Okay. Now, what I have picked? Initially, I picked the UN Sustainable Goal. That is called SAG. I will, somewhere I have written or not. So lecture is very short, so I will tell more things also sometimes that will not be included in the slides. It might be possible. So SDG goals. So world is focusing on the SDG, Sustainable Development Goals. They have set 16 to 17 points. You can go through the Googles also as to what is SDG. So it covers environment, health, and so many sectors it covers SDG. Means the objective behind the SDG is to make a world sustainable. Or it also covers so many things like waste to wealth. That is an emerging sector in the around the globe, waste to wealth. But since the topic is concentrated over my journey, so I would like to start my journey over here. It's taking time. Is next slide is showing on your screen? Anyone, please? Is next slide visible to you? Yes, sir. It is visible, okay. But our maximum students are offlinely join also. Okay, no problem, no problem. So anyone just coordinating me in between if there is any technical issue. Yes, I am there, sir. I am there. Okay. So here just I have plotted the. I have not made this plot. This plot is made by my CA, who submit the utilization report at the end of the financial year. So this is not the end of the financial year. It is in the December. So financial year is going to be end in the March. So initially for any startup, here the name of the startup is Yantrino. Yantrino means yantra, machine. So basically my academic background is mechanical engineering. So I have just picked this name, Yantrino. Yantrino Private Limited. The company was registered in the early of the company has been registered in the early of January 2022, and till the March I got frustrated. Only loss. There is no revenue. But it is quite obvious for all the startups. These kind of problems they face always along their journey. Then we have to move to procure some other orders, government orders. Some project is also I am working over the environment of Patna, how it's climate change of Patna, the transitions in the water quality in and out of the Ganga rivers. So there are so many projects right now I am having.
And all the project is being completed or being done by the students that I have gathered as an intern. So the main focus of the this startup is to have an intern. All the intern are paid interns, and also we have some networks of the company where we just send the students to just please have it. The person is having such kind of knowledge, they have done such kind of good research, they have published some papers also, so it will be highly beneficial for your company if you have it. So by this way they can get placed also. So this is the revenue models, how to generate the revenue. And if I contact to the governments and some other NGOs also, just recently I have picked one NGO. The name of the NGO is, I'm just forgetting, but he is working for the climate change in the India. And the NGO is having 400, 500 employees, but they are lacking in research. They have to put their research for the further grants. So I have just assigned some students to complete their systematic study and make a report. Research paper is nothing but a suitable report. So that report can be further converted in the form of a structured document and maybe sent to the some other publication house for the publications. So this way, we generally gathered a economy. Other students that are associated with me, there is a huge crowd I am seeing from here. There is a huge crowd. So they may think in your brain also. One brain may have many brains. One brain sometimes tells, oh, do this. Other brain, the same inside our brain, tell, no, this is a very dangerous thing. Don't move in this direction. So first you have to pick so many sectors if you want to be an entrepreneur or if you want to start a new venture, a small ventures. So please start with a very small venture, no matters. But your mind must be calculated. You must have to calculate all the data like a detailed project report, DPR, survey also. In the technical term, it is called empathizing. So empathize means you have to put the customer situations. You have to put yourself in the customer situations and just realize what kind of requirement they have. And based on that, if you find out some ideas, so idea, you do not, it's not your work to just throw the idea over the consumers or end users. You have to filter out the ideas among the consumers or among the target customer. So whenever you set the target customers and if you filtered out the idea over there, the chance of success of as an entrepreneur for fulfilling those ideas will be far easier. So it was also a very gap sector. Still, there are so many persons are coming in the edutech. This is basically a sector defined by the government, edutech. So the company registered under the heading of training and research. So if you register a company under the heading of training and research, your domain is so high. So just the recent 4 or 5 day backs, I have taken one project for fortifying the millet products, fortifying the millet laddu. So we are trying to make a laddu that is fortified with the other Ayurvedic herbs and will be sent to the NIFTM to analyze their toxicity, analyze their adaptability, and so many parameters they will analyze. Then they provide a certificate. I will submit the certificate to the FSI and FSI will approve me. Yes, you can manufacture these products and can be sent into the market. So if you start a journey, there are so many things is coming day by day and you can add on your startups and your startup is growing day by day. But you have to pay much time and fresh time, integrated time. And once you start your journey, if you think, this is a bad thing, I have to divert my goals in other directions, then what will happen? After 3-4 months, 1 second. After 3 and 4 months later, if you choose another goal to set another idea and trying to fulfilling the other startups, again 3-4 months later, if you realize, again I have chosen the wrong ideas.
Then, so this is not the way to succeed a startup. Whatever you choose after a calculating way, after a market survey, other startup, whether the other startup is working in this area or not, you cannot succeed. And once you pick the ideas, you have to make it successful by hooks or by crooks. That should be you must have a strong minds of failures. Now, where is the questions of the fundings? There is not a much bigger issue. If you have an idea, I'm especially telling to the undergraduate students, if you have a if you have an idea of any kind of idea, just discuss among your friends, try to firm up your idea, and just do have some marketing and try to start making pitch how this idea can be fulfilled, how will be the revenue models, how can I get a revenue, what many revenue can I generate. So the projection, it's not a true, but a projection. You must have in the minds the projections. And based on the whole projections reports, we just simply apply for the Startup India Seed Fund scheme. They will call you. Suppose the student capacity is 200 of any college, and all the students have applied for the novel ideas. So there might be chances that some of the idea may be filtered out and may be very good and may get a grant, huge grant maybe. Even after giving the grant by the government of India, if you think the grant is very less, then again you can pitch for the angel investor or venture capitalist. If they found your idea is so good and it needs a huge funding, they will fund you. Means they will fund you in the terms of crore, 20 crore, 100 crores, or so many crores. So don't hesitate to start startups. You can take it's in the incorporation of a company, it may take maximum 15 to 20,000. I am telling to the undergraduate students. So if you have in your mind, if you have a 20,000 or 25,000 rupees in hand, you can start a startup, new ideas, registration. And then to go to the, suppose your organization is innovation cell, institution of innovation council. So you may consult to your innovation councils. They might have some connection with the MSME also. MSME is also giving 10 lakhs. And out of 10 lakhs, they will give 2 lakhs to the mentors. If idea is successful through the MSME, you will get 10 lakhs. And out of 10 lakhs, 2 lakhs will be given to the mentors. Okay? So it is a win-win situation, both the side, from the faculty side and the student side. The idea is of students, but the faculty will nurture it. And after nurturing it, they have to apply to the MSME. In a year, MSME calls for proposal twice. 2 times they call for proposal for the ideas. And very few persons, entrepreneurs or students, they put their idea over there. They fail to pitch over there. So pitch should be so nice, so brief, so integrated, so as to it can influence the judges sitting over there. Judges is not a very big technocrat. They just set host institutions. So you can also apply for the host institution also. Your innovation cell can apply for the host institution or other host institutions already existing over there. You just consult to the host institutions and tell, I have an idea, this idea. And even if you do not consult, then also you can apply all the process. Everything is online also, no problem to go for the host institutions. I have an idea. So basically, the lecture behind this motivational speech is to just boost up the graduate students. So you can do it. Suppose one baby, 6-month-old or 7-month-old, they starts walking. They falls many times. Then again, he tried to stand up, then fall, then stand up. Finally, he runs. So you can run, no matter. You can run if you have ideas, and idea must be novel. That's so that you can get a funding easily. See, funding is a main requirement. Your guardian will may fund or may not fund. That is the other issue. But if your idea is really novel, innovative, the government is ready to fund you. And 10 lakh funding is quite easier. Anytime, I am just telling to all the students, if you have any time, you may consult to Dr. Santosh, and through Dr. Santosh, he may consult to me. No matter, I will support you.
At least for the initial 10 lakhs of funding, you can get it. Second thing, I am just discussing. No, I don't want to spend more time. So the current situation of this startup, my company, is it has been recognized by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. It has been also recognized by the Startup India, Make in India, and Digital India. So what is the need of recognition? If you are not recognized, your product will not going to sell. Suppose you are making anything. Suppose you are making a unique kind of samosa. Na? There is one startup in Bangalore, na samosa wala, I think. What is the name? Samosa wala. He make variety of samosa. Okay? But if you are once recognized by so many government body, you can get a funding easily. So expansion of business required huge funding. Initially, it's good, say it can run and you are getting just bread and butter, 20,000, 30,000. But this is not the purpose of businesses. Businesses means it must expand throughout the state, throughout the country, throughout the globe. That must be the motto of the startup in the beginning also. No problem. I don't think this thing I have to discuss or not. Just very shortly, I would like to discuss my domain, in which domain we are working. The major domain of working is SDG, the downward, Sustainable Development Goal. And just so other sectors, currently we are working in food processing, electrical vehicles, BMS, battery management system. It is a huge challenge. And one of the startup here in Bihar, named Pythox Motor. He is suffering a lot. So just I have assigned those projects to the students. The student is analyzing the BMS. Analyzing means you cannot do all the things by your end. You have to connect to other institutions, other technocrats. Just inculcation and linkage of the experts is the major things. You can get a money. If you succeed to linkage of the other experts or technocrats to get the solution of any user's faults, you can get a money. So this is basically this thing is basically for the student projects. I'm just taking up projects from the industry, and I am just putting the students over there to solve the problems. And a student benefited from one side, they get a certificate from the company or from our sides, and I am benefited from the company from where I get the order. So this is the things. Green energy, government is also focusing very much in the green energy, green lubrication. Green lubrication is a very emerging field right now, very emerging field. What is happening when you splash the mobiles from the bike, truck, and whatever may be, it gets finally mixed in the soils. And it penetrates in the soil, penetrating after 30 and 40 years, there might be chances to get mixed into the drinking water. And whenever you pump out the water, through the food cycle, it may enter inside your body. So that's a very dangerous thing in the coming future. So government is just trying to ban all the chemical lubricants. So this is the UN resolution through the SDG. All those things are through the SDG. They are putting some pressure to the developing country, and if under developing country or like a developing country like a government of India, India, if he tells to the UN, I have decreased the consumption rate in the chemical lubricant by 30%, 20%, they get a huge fund from the UN. So everyone is focusing on the slashing the consumption of the chemical products. So in that field also, if you put your brains to make startups, or if you want to be a startup in this field, green energy, green lubrication, electric vehicles, you can get easily funding. That's fine. The focusing in these domains is to the main objective behind focusing this domain is to just tell the brains of the undergraduates, if you are putting your legs in these sectors, you can be a next startup easily. Like a manufacturing also, additive manufacturing. In India, it's very rare still. Okay? But in US, in some other places,
They are having a teeth replacement, bone replacement, all those things. So the manufacturing of customized manufacturing products through the additive manufacturing, the other sectors. So there are so many sectors emerging in manufacturing also. Robotics, you know already. AI, you know already. Machine learning, AI and machine learning, both is a, it is a endless process. It will continuing in running. So if someone thinks after 13 or 14 days, those things will be obsolete, it is not going to be obsolete. It will be remain in the more advanced stage. Suppose what will happen to the chat GTP, all you know now, chat GTP. I was trying to put some numericals of the physics in chat GTP and he successfully solved. Yesterday, I tried to put some JEE questions in the chat GTP and he solved the problem. See what the situation. Packaging. Packaging, only 4 and 5 institutions in India. Just remember, packaging. No one is touching these things. It's not a simple sector. Packaging. IIP Mumbai, Indian Institute of Packaging Mumbai. One is in Hyderabad, other one is in Kolkata, and one is, I think, Kanpur or Delhi. So only 4 institutions is running in packaging. Packaging is the major sector. Major sector. Why packaging is a major sector? Initially, it was a polypack, then transferred to the tetra pack, cane packs, and if you are transporting the different hazardous chemicals, it requires other kinds of packaging. So consultancy in the packaging or a startup, if you take a startup in the packaging, if you succeed to replace the polypack by the other materials, means if you are putting your effort as a startup in the material development for the packaging, it's a new sector and this sector having a very vast gap. This sector is having a very vast gap. Packaging. So the youngster, I am requesting to just do little study over the packaging. It's a very versatile, very rigid, complex thing is there, packaging. And world is suffering to replace the polypack. But still there is a process. So if you put your startup in these sectors, so this will be a very innovative and you can get a funds easily. Other sector is known also. No matter, I'm not taking, I'm just skipping this slide. So I'm coming over here. So I have just founded this company with the help of some team. So just I would like to introduce my team. One of my brilliant member is with you, Dr. Santosh Kumar, already over there. And all are my friends, no doubt, all are my friends. Some are from IIT ISM, someone is IIT Kanpur, IIT Kharagpur, some are IIT BHU, and one Mr. Amod Karnish, he's also from BHU, but his stream is in marketing, MBA. So you have to make a group also. If you start a business, just try to make a similar kind of friends, a group. Alone, you cannot do anything. In Hindi, there is a one idiom, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ठीक है? So it's true. If you think I can do all the things, I can do marketing, I can do manufacturing, I can do procurement of the equipments, I can do lighting also, I can handle the office environment also. You cannot do lots of things alone. So to be an startups, just try to collect the data from your student sites and similar minded friends. You can just make a club, just brainstorming the ideas, and just find out the minimum viable product is possible or not. Okay. So ideation is quite simple. Idea may be 100 ideas, 200 ideas, or 400 ideas, or 20 ideas. But you have to start with the one idea. Idea may be infinite, but the startup will start with a single idea. So having ideas in lot is not a problem, but you have to sort it out with the discussion among the friends and conclude on the single ideas. Do a study, do market research,
empathize the idea among the target customers. After there, you have to prepare your own DPR, detailed project report. So once you develop a complete DPR, own DPR, detailed project reports, just try to analyze, consult to your innovation sales. Through your innovation sales, you can consult to the Government of India for further fundings. That is the importance of the team. So don't forget a team if you want to be a successful entrepreneur in future. Without team, you cannot do anything. That is the importance of it. Now, I would like to just put over here some data. Just go through the slides. Here it is written, Indian students doing after graduation and what USA students doing after graduation. There are two comparisons I have put over here. So it's quite interesting. Just go through the slide first, read out your, I will tell you, explain you later. So we are pursuing a graduate degree. Sorry to disturb you, sir. Will you please थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप इसको? छोटा हो गया। यानी वो स्क्रीन शेयर चालू कर दीजिए डायरेक्टली। यानी स्क्रीन शेयर नहीं, स्लाइड शेयर करके आता है ना पूरा, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स अच्छा प्रेजेंटेशन मोड पे ला दीजिए। अच्छा, तो इट विल कवर द होल स्क्रीन। वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर साइड में दिखता है ना, देयर। एक सेकंड या Now is it visible? Yes, sir. Okay. सर एक थोड़ी सी और रिक्वेस्ट थी। जो यानी जो आपकी स्टोरी है, यू आर देयर फ्रॉम द IIT एंड विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड योर एक्सपीरियंस, share those with us, and we are comfortable with Hindi and English both love language. So थोड़ा सा कैसा है ना, student directly connect हो जाएंगे, because right now our students are thinking about the these both of the things, means higher education as well as the US. हर किसी को US जाना ही जाना है, first choice is like that. So that's why आपकी जो real story है, share that also, so it will connect with us directly. Thank you, sir. Okay. So, am I audible now? No? You are audible. Okay. So, my dear students, okay. So, I started my journey as an academician after passing out from IIT Kharagpur or IIT ISM as an assistant professor in Jindal Steel Power Limited. तो पहले हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं। Yes, yes. तो हमने मणिपाल ज्वाइन किया, और जॉब जो होती है वो जॉब होती है, सबकी अपनी मेंटालिटी है, ठीक है? जॉब इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई पाप नहीं करते, अच्छा चीज करते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों का पैशन होता है कि नहीं मैं कुछ अपना करूं, और अपने मर्जी के मालिक होते हैं। जो अपने मर्जी के मालिक होते हैं नौकरी कर नहीं पाते हैं, हर जगह उनको कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि हम हैं, नौकरी हम नहीं कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को बियर करेंगे, तनाव को बियर करेंगे, जो कि वहां पे अवेलेबल रहता है, और उनके साथ ही फिर एक रिटायर्ड कर जाएंगे और 60 ईयर के बाद फिर कुछ नहीं रहेंगे, एक बेयर हैंड रहेंगे, खाली हाथ रहेंगे फकीर की तरह, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी तो वैसा गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है कि आप रिटायर्ड कर जाएं, रिटायर करने के बाद भी आपके पास कुछ गवर्नमेंट पैसा देते रहे पेंशन के रूप में, और आप अपना जिंदगी चलाते रहें। तो 60 साल में जो आप बिजनेस करेंगे, और वैसा ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है कि आपको कुछ सपोर्ट करने वाला है कि चलो अब ओल्ड हो गया तो चलो भतीजा है तो ये है वो है, कोई सपोर्ट नहीं करता अभी ना। तो अगर आपको लगता है कि आप 60 साल बाद करेंगे अपना जीने करना क्या है ना, हैं? हेलो, ये आप हेलो,
Continue, sir. Please continue. Oh, some sound was coming. Yeah, by mistake they unmute. Okay, ठीक है। तो आप जो 60 साल बाद सोचेंगे कि हम कुछ अपना आप इंटरप्रेन्योर शुरू करते हैं, दुकान शुरू करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, तो आपके पास एनर्जी बचती नहीं है। और एनर्जी नहीं बचती है उस केस में आपको लगता है एक नया सेटअप है तो आपके जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनर्जेटिक स्टेज में कुछ भी स्टार्टअप लेते हैं आप, तो ये स्टार्टअप 4 to 5 ईयर में धीरे धीरे लंगड़ाते लखड़ाते किसी तरह खड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली खड़ा हो जाएगा। और जो आप अर्निंग करेंगे नौकरी से उससे तो अधिक देगा, इतना श्योर है, उससे कम नहीं देगा आपको स्टार्टअप। तो बेसिकली ये मैडम का फोकस है कि हमने ये सब स्टेप क्यों लिया। और मैं देखिए, मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, ठीक है। मेरी पूरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो सब हिंदी मीडियम में हुई है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो इंग्लिश बोल पाता हूँ वो बिकॉज ऑफ द एकेडमिक कैरियर मेरा रहा है अच्छा, इसलिए मैं बोल पाता हूँ। No, sir. We are also from the rural area. Our college is there at Thana district, Maharashtra. But the crowd is from nearby cities and from village also. So the mixed crowd is there. So your motivation is very valuable for us. तो हम लोग जो है सो गांव में रहे और शुरुआती दौर में तो सब वैसे ही एकेडमी में पढ़ाई नहीं हुई जो बच्चे पढ़ते हैं सिटी में आकर के कॉन्वेंट वगैरह में जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, वो कुछ नहीं था। वो जाए जमीन पे लोग बैठते थे और पढ़ते थे, वैसे ही पढ़ते पढ़ते हम लोग सब कुछ किए। और बाद में हम लोग फिर जॉब जिंदल स्टील पावर लिमिटेड ज्वाइन किया हमने। तो वहां पर भी हमने रियलाइज किया कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो नौकरी छोड़ छोड़ के को शुरू कर रहे थे। जैसे एक वहाँ लड़का था रणधीर बोल के, वो क्या किया कि वो मेरे अंडर में था, तो मेरे अंडर में था और मैं वहाँ उसमें इंजीनियर था और वो ऑपरेटर था। वो अचानक दिन आया, बोला भैया मैं अपना खुद ही एक मशीन बैठा लेता हूँ। हमने क्या बैठा लेगा भाई ऐसे? तो नहीं, लोन देने के लिए बैंक तैयार है, सब मैं एक छोटा सीएनसी बैठा लेता हूँ। सीएनसी तो बहुत महंगी आती है, बड़ी महंगी वाला नहीं, लकड़ी वाला बैठाऊंगा, सस्ता वाला। तो लकड़ी का बैठाया सीएनसी। अभी वो रायपुर का लीडिंग सप्लायर है कस्टमाइज। जैसे मान लिया शादी आपकी हो रही है ना, तो पलंग के नीचे मान लिया कि ब्राइड्स और ग्रूम का फोटो चाहिए विथ गुलाब चाहिए, तो लकड़ी में ही इंटीग्रेटेड पार्ट में वो सीएनसी से मैन्युफैक्चर कर देगा। और अभी कुछ दिन पहले वो आया था, हमसे मिला, तो ऐसा इनोवेशन किया है वो कि स्टोन पे वो कटिंग करेगा और एक अलग तरह की स्टोन आ रही है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट स्टोन है। स्टोन पे ऐसा कटिंग करेगा कि उसके बैक से जब लाइट आएगा तो लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट फिगर है आदमी का, मैंने गजब सुंदर। तो और बहुत सारे लोग, मतलब ये स्टार्टअप तो मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ स्टार्टअप का टर्मिनोलॉजी, अदरवाइज ये चल ही रहा था। बहुत सारे लोगों ने और जो भी मतलब कि जो हौसला ले रहे थे सब छोटे लोग लेते हैं। बड़े नौकरी करने वाले इंजीनियर और मैनेजर कभी नहीं छोड़ता नौकरी, इतना भी याद रखिएगा। मेरे जैसा भले दो पागल मिल जाए छोड़ दे नौकरी, मैनेजर कभी नौकरी नहीं छोड़ता, इंजीनियर नौकरी नहीं छोड़ता। नौकरी छोड़ने वाले होते हैं छोटे वाले लोग, और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। एक और मेरा दोस्त है बिहार में, महेंद्र, वो भी मेरे साथ था वहां पर, और वो बहुत छोटे पोस्ट पे था, बहुत छोटे पोस्ट। उसको बोला भैया इतना ही कमाता हूँ, इतना मैं तो वहां भी कमा लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो हमने क्या करेगा, प्रमोशन हो जाएगा, मैं रिकमेंड कर दूंगा, हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसने नहीं माना और छोड़ के क्या शुरू किया पता है? आईटीआई स्कूल में पढ़ाने गया, इसलिए कि वो पता कर सके कि आईटीआई खुलता कैसे। तो 1 साल पढ़ाया और उस समय उसको 20 लाख रुपए लग रहे थे आईटीआई खड़ा करने के लिए। वो किसी तरह से फंडिंग इधर उधर तो नहीं कर रहा था, जुगाड़ कर करके खड़ा कर दिया। अभी उसके पास 3-4 आईटीआई है और हम वही इंजीनियर के इंजीनियर। वो पढ़ा लिखा नहीं था, आईटीआई था। अभी वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो स्टार्टअप बहुत पहले से भी चल रही थी, ऐसा नहीं है ये टर्म अभी आया है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, डिफाइंड रिस्क, तो फेलियर नहीं होते लोग। लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे रिस्क है, रिस्क है। रिस्क वहीं पे है जब आप बिना कैलकुलेशन के मूव कर जाते हैं। मैं एक और कहानी बताता हूँ आपको कि हम कंसल्टेंट हैं, तो गवर्नमेंट का कंसल्टेंट हैं, निजी कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो मेरे पास एक डेयरी वाला आया और बोला कि सर सो मैं आपको इतना रुपए दूंगा, मेरा पूरा सेटअप लगवा दो और बता दो कैसे कैसे होगा। तो हमने उसको आधा आधा पैसा दिया, तो आधा कंसल्टेंसी करके छोड़ दिया वो हमको। अब छोड़ दिया तो डूब गया और फिर उगला चल गया। तो या तो आपके पास ब्रेन नहीं है तो प्रॉपर कंसल्टेंसी से मूव कीजिए, और आप लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो खुद ही एक एक पहलू को ध्यान में रखिए, कहाँ कहाँ क्या होना है, कहाँ नुकसान होना है, कहाँ मार्केट बनेगा, कहाँ मार्केट नहीं बनेगा। और पूरा कैलकुलेशन के साथ अगर आप मूव करते हैं तो फेलियर ऑफ ओनली 5% से 4% है भाई फेलियर। ये जो जो दुनिया में हवा बना दिए गए है ना कि बिजनेस में कूदोगे डूब जाएगा, बिजनेस में कूदोगे डूब जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
चाणक्य भी कहे थे, नास्त एकदम समो बंधु कृत्वा यंग नासी देती। उद्यम से बढ़िया कोई दोस्त ही नहीं है जिसको अपनाकर कोई दुखी नहीं हुआ आज तक। आज तक उद्यम को अपनाकर, इंडस्ट्री को अपनाकर कोई दुखी नहीं हुआ। अब ऐसे ही तैरने आता नहीं है, गंगा में कूद डूबेंगे। तो गंगा में कूदना है तो पहले तैर के कूदना है, तैरना सीखना है, उसके बाद कूदना है। तो ये पढ़े लिखे लोग कम डूबते हैं। आप लोग अगर कैलकुलेट करके कूदते हैं मार्केट में तो डूबने का चांस नहीं होगा कि आप डूब जाएंगे। अभी मान लीजिए कि मेरी रेवेन्यू सस्टेनेबल हो गई है, ठीक है, मैं सब कुछ ठीक है, आने वाले फ्यूचर में और अच्छा हो जाएगा आई होप, ठीक है। अदर सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं। हम तो अभी ओपन कर दिए हैं, जो भी प्रोफेसर जो भी एड ऑन होना चाहते हैं एड ऑन हो सकते हैं, जो भी बिजनेस आएगी उसमें वो भी शेयर लेंगे। क्योंकि जब तक आप मॉनेटरी बेनिफिट किसी को नहीं देंगे कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और फ्री में सपोर्ट लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका बिजनेस बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा फ्री वाला काम। तो आप लोग के अंदर अगर कुछ वैसा पोटेंशियल दिखता है किसी भी तरह का, छोटे छोटे, मैंने इतना एग्जांपल, मैं कुछ जिसको मैं कंसल्टेंसी दिया हूँ उसको मैं लिख के रखा था, कहाँ रखा है, किसको किसको दिया हूँ। हाँ, एक लड़की है रश्मि, उसका गूगल कीजिएगा मिल जाएगा। और उसको हम लोग कंसल्टेंसी दिए हैं। वो उसका प्रोजेक्ट को सब लोगों ने नकारा, मतलब कि सेक्रेटरी डीएम सबने बोला है बकवास, चलेगा ही नहीं। वो लड़की निफ्ट की थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी, लेकिन उसको लगता था कि ये चलेगा। हमको भी लगता था नहीं चलेगा, ये सब बिना चलने वाला नहीं है। वो करती क्या थी, एक एक इंडिविजुअल का जो जूता है वो डिजाइन करती है कैम से, मतलब 3D स्कैन करती है लेग का 3D स्कैन करने के बाद उसको क्या करती है, जूता को डिजाइन करती है और देती है। तो शुरू में बहुत कम लोग ले रहे थे, लेकिन किसी किसी को फ्री में दिया। हम तो नहीं पहने हैं वैसे, कुछ लोग पहने हैं, बोलते हैं कि रियली बहुत कंफर्टेबल होता है। अभी उसका बिजनेस इतना चल गया भाई कि मोदी जो अभी G20 के मिशन में उसका फोटो छाप दिया है, इतना बड़ा बिजनेस चल गया उसका। तो दुनिया क्या सोचती है उस पर सोचना ही नहीं है, दुनिया सोच सकती है कि फेल होगा, क्योंकि दुनिया थोड़ी सोची है आपके बारे में। आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने आइडिया के बारे में जितना आप अध्ययन किए हैं उतना कोई वो अध्ययन नहीं किया है। तो जब आपका अध्ययन सबसे अधिक है तो फिर दूसरा कोई क्या समझाता है क्या नहीं समझाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि आप फेलियर होंगे तो बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे हम मेरा उतना स्टडी नहीं है आपके फील्ड में, आपके प्रोजेक्ट को लेकर के। अच्छा, दूसरा बेनिफिट है कि अगर कोई IIT वाला बंदा कोई जॉब छोड़ता है, या फिर वो ऑलरेडी स्टेबल है, मणिपाल में है या फिर जिंदल में है और जॉब छोड़ता है, तो फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फैमिली वाले और सपोर्ट नहीं करेंगे कि पढ़ाई लिखाई था इसी के लिए क्या, नौकरी छोड़ने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपके अंदर अगर दृढ़ निश्चय है, ठीक है, तो आप सफल होंगे। सफलता और असफलता आपके हिस्से में नहीं है, ठीक है, आपके हिस्से में केवल और केवल कर्म है, इतना याद रखिएगा। और कर्म सही होगा, कैलकुलेटेड होगा, बेईमानी का नहीं होगा, तो बिजनेस सफल होना है। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा भगवान निर्दयी नहीं है कि आप बहुत हार्ड लेबर कर रहे हो और आपका साथ न दे। हार्ड लेबर कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, कौन साथ नहीं देगा, सारा चीज साथ देगा। इन्वायरमेंट विल बी कंड्यूसिव और आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने में कोई चिंता नहीं। ये एक छोटी स्टोरी है। स्टोरी तो बहुत सारे हैं, बीच में बहुत सारी समस्याएं आती गई, लोग जुड़ते गए, कोई हटते गए। वो सब स्टोरी सुन सुन के और फेडअप हो सकते हैं लोग, इंस्पायर होने के बजाय, ठीक है। Sir, it is not like that. That is a part of business and journey of business. पार्ट ऑफ ये सब होता है बिजनेस। बिजनेस में yes. ये सब चीजें होते रहती हैं, ये कोई But we मैटर have नहीं to है। keep on a goal. गोल पे ध्यान रखना चाहिए, हमको क्या करना है। गोल पे ध्यान रखना चाहिए। और आपने जो अध्ययन कैलकुलेट करके ही कोई आइडिया लेना है, हवा में नहीं लेना है कि मतलब हम ये फलाना कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यू मस्ट हैव टू इंश्योर विथ योर कैपेबिलिटी, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं आजकल, क्योंकि जब वो बात करने जाते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से या एडमिनिस्ट्रेटिव से, तो उनको पता होता है कैसे कैसे बात करना है। अगला भी समझता है पढ़ लिख के आया है बिजनेस करने, तो पढ़ लिख के बिजनेस करने आया है तो लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जो नियम हैं और जो फंडिंग एजेंसियां हैं और जितने भी चैनल्स हैं फंडिंग्स के, वो सब की नॉलेज ज्यादा है आपको, इरिस्पेक्टिव की जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। इसीलिए तो पढ़े लिखे लोग पारंपरिक बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। बाबूजी का था राशन दुकान तो मेरा भी राशन दुकान, पोता का भी राशन दुकान, बेटा का भी राशन दुकान, वो उस दुकान से नहीं हटते, क्योंकि उनके पास उस तरह की नॉलेज होती ही नहीं कि अलग चीज को ऑप्ट कर सके। वो ट्रेडिशनल बिजनेस फॉलो अप कर आ रही है। उसको ब्रेकअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप लाया कि हम स्टार्टअप देंगे ही नहीं आपको राशन की दुकान के लिए, हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम पैसा खूब देंगे अगर आपका इनोवेटिव आइडिया हो, चाहे फेल हो जाए पास, हमको मतलब ही नहीं है। तो
आपको थोड़ा सा जानकारी अपने मेरी हिस्ट्री के बजाय थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल जानकारी देने में ज्यादा बेनिफिट समझता हूँ, इसलिए प्लीज 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 वो भी दीजिए, तो उसी की जरूरत है। क्योंकि फंडिंग जो है 3 तरीके से है। एक फंडिंग है आपको जिसको बोलते हैं डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा। हमने गवर्नमेंट जो है कर्जा दी और वो भी 0% इंटरेस्ट पे देती है। गवर्नमेंट आजकल इंटरेस्ट रेट पे, किसी भी इंटरेस्ट रेट पे फंडिंग नहीं हो रही है, बी श्योर, ठीक है। फिर भी उसको बोला गया डेप्ट क्योंकि रिटर्न लेगी गवर्नमेंट। सेकेंड है इक्विटी। अगर इक्विटी गवर्नमेंट नहीं लेगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको व्यवस्था कराती है एंजल इन्वेस्टर का या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट का। एंजल इन्वेस्टर उसको बोलते हैं जो स्टार्टअप को शुरुआती दौर में पैसा दे देता है, जैसे लेंस कार्ट को दिया, बाइजू को दिया, ये सबको इन्वेस्टर ने पैसा दिया है। इनका अपना पैसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग थे और इनको पैसा लगाने वाला सब इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है। तो वो लोग इक्विटी ले लेते हैं कि हम चलो शेयर ले लेंगे इतना परसेंट का। और तीसरा है ग्रांट। ग्रांट बिल्कुल ही इनोवेटिव आइडिया को मिलती है, जिसमें पैसा दे दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। गवर्नमेंट अगर आपको 20 लाख दे दी तो दे दी, रिटर्निंग लेगी नहीं, तो इसको बोलते हैं ग्रांट। तो इक्विटी, डेब्ट और ग्रांट, ये 3 टर्मिनोलॉजी में पैसा आपको मिलती है। तो जो ग्रांट में पैसा मिलती है वो एक इंजीनियर्स के लिए और नए नए लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि ग्रांट क्या, आपको मिल गया पैसा और आप डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डूबेगा नहीं क्योंकि आपकी कंपनी तो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और अच्छे से यूटिलाइज करना भी चाहिए, क्योंकि पैसा तो रिटर्न करना नहीं है आपको, पैसा आपको दान के रूप में दे दिया गया, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रांट, मतलब दान में दे दिया, गवर्नमेंट ने पैसा को आपको दान में दे दिया। तो पैसा अगर आपको दान में दे दिया तो गवर्नमेंट केवल एक ही चीज मांगती है, उसका नाम है यूसी, उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। वो एनुअली आपसे मांगेगी, आपके सीए के द्वारा बना के देना होगा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है, इतना पैसा हमने आपको दिया है, कहाँ कहाँ खर्च किए, क्या किए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेंटर गवर्नमेंट देगी, सब कुछ गवर्नमेंट देगी, मेंटर भी गवर्नमेंट दे रही है। तो आपका काम है कि आप उसमें आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो उसमें सफलता होगा। अच्छा, इतना लंबा सेशन हो गया है, किसी बच्चे का क्वेरी हो तो वो भी कुछ पूछे, चूंकि स्लाइड टाइम फिनिश होने वाला है, हम चाहें सर बच्चे के पास कुछ क्वेरी हो तो हमसे बात करें। यस सर, यू प्लीज कंटिन्यू। हम लोग क्वेश्चंस निकाल के रखते हैं, देन एट द लास्ट वी विल आस्क यू। और ऑडियंस को एक बार बोलिए कि अगर उनके पास कुछ है तो बोले, वो कोई दिक्कत सर नहीं विल कलेक्ट ऑल दोस। अच्छा, कलेक्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ तो बच्चे ऑफलाइन भी है ना वहां पे, हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाई, एंड अच्छा सम आर ठीक है। ऑनलाइन सो दे कैन आस्क डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए कि हम लोग के यहाँ कुछ जो अपना एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें भी चेंजिंग आ रही है ताकि आप स्टार्टअप ज्यादा बन यस सके। यस ये सब जो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे, ये सब इकोनॉमिक्स टाइम, ये सब का डेटा ला के हम पुट किए हैं यहाँ पे। यस कि यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा नौकरी मांगते हैं, हड़ताल कर लेते हैं, और चूंकि वो उनका कोई गलती नहीं होता, आप बताते ही हैं कि हम ग्रेजुएशन करा रहे हैं तो नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं देते हैं तो हंगामा तो करेंगे। हाँ, जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir, please. Sir, I just want to know what is the basic difference between if I want to start up a startup. So, shall I start up with a private limited firm or a limited firm? No. The definition of a startup as per Government of India norms is any legal entity can be a startup excluding Section 8 company. ठीक है, तो limited is a different thing. Limited cannot be a startup, but a private limited can be a startup. या LLP. Okay. LLP and private limited company can be a startup. Other legal entity cannot be a startup, like a Section 8 company. वो सब startup नहीं हो सकते. So if I start with a private limited, I can raise the funds from the government, as you have said. You can, if you start a private limited company. Pardon, please again. If I start with a private limited company, and we can raise funds from the government. हाँ, you can raise the fund for the government. The procedure is that you have to be incubate from some incubation center. ठीक है. Still today total 61 incubation center running across the India by the Niti Aayog. ठीक है. You can contact over there. If you could not contact over there, no matter. You can directly go to the Startup India Seed Fund Scheme,
where you have to be registered as a DIPP certificate. First, you have to register for DIPP registration certificate. Once your certificate is generated, the next step is that you have to go for a Startup India seed fund scheme. So that portal will ask you 3 incubator name for funding. So government will not fund you. Government send the money to the incubator, and incubator will give money to you in the form of either debt or equity or grant. So if the idea is highly noble, you can get a grant also. Okay. Thank you, sir. And if you have a problem, you may contact to me freely, no problem. Okay. Okay, definitely, sir. Because we have been coming from you, sir. We will contact you separately for same. No matter. Because no our matter. students also need that we stuck at some points. So this will be very valuable for us. We are Any other question? So we have been coming up with a solution in the tires for the regular tires for the 2-wheelers as well as 4-wheelers. So the problem of puncture will be permanently solved out. If you nail a nail also after putting the solution, the tire will not be punctured. Okay. So there are various products in right now. There are 2 competitors. So we are also jumping into that thing because the market is huge. Okay, okay. Market is huge, but you have to assess also whether this kind of practice is already running or not. If this kind of practice, wait. If this kind of practice is already running, just do little modification. If you found that this kind of practice is already running in the market, just do little modification. Like you may connect to through the app. If you have found the puncture problems, just click on my app. Our members will reach over there and provide the solution. This kind of any model. If there is any existing model, if you add on little things extra inside that can be converted into the innovation idea. Okay, sir. Thanks for your guidance. Any other question? Students, you can put your questions in chat box also if you are unable to get connected. Sir, you please get over. We will start with the sessions, question answer sessions simultaneously. Okay. So in other countries like Japan, USA, we have gone through the details through Niti Aayog. I was 3-4 days back in the Delhi. There was a meeting with the Niti Aayog, and they were discussing over a study pattern of India and a study pattern of USA and Germany. Some other ambassadors were there. They are totally different. Okay. So suppose in the 8th semester, you are undergraduate students of any BTech stream, civil, mechanical, electrical, AI, ML, whatever may be. You can do the projects. Okay. You can do the project very seriously under the guidance of your professor. Okay. Don't take it very loosely. Just I have to submit the report and get the things. Just take up a project according to your wish. Suppose just this is my 6-month startup. I want to work in this field. Okay. And take up a project accordingly. Do something that will help also in making a DPR and what are the things. You may consult to some other startup also running over there. And one incubator in Mumbai named, I will tell the details to Dr. Santosh also regarding some incubation center running in the vicinity of Pune. So you can get benefit for that innovations ideas and how to nurture those ideas. So I am coming to the next slide. Yeah, ये कोई मतलब का नहीं है. This slide is basically for you audience, but a slide does not deliver much. I have already delivered very much about the startup system and how the startup system is running. Now I hope you must have in your mind some ideas or some problems, some queries. So I am waiting your side. Just say some questions, some queries. Hopefully I will try to solve you. So I'm waiting. Just ask some questions.
Yes, from audience side. Staff, please ask some questions. Staff also in this field ki how to get an incubation center, what is the benefit to have an incubation center. That will be the next one. If as we are the engineering students, college, how we can go for the incubation center and all? Annually, Government of India, Atal Innovation Missions, ask for proposals once in a year, and you have to prepare the complete project reports, how to invest the money, where to invest the money, and why do you want to need a incubation centers. There is a format already there in the site. There is a format of incubation cells already there in file, and the budgets allocations for the incubator is approximately 4 crore a year. So Government of India is giving you 4 crore a year, for which approximately 2 crore you have to invest in developing a laboratory, new kind of laboratory, like fab labs, पैकेजिंग लैब्स, जो भी लैब लगाना चाहते हैं आप, वो आप लगा सकते हैं. उसके लिए वो फंडिंग देती है, केवल आपको यूसी वहां जमा करना है. उसके अलावा एक और है जो कि बहुत आसानी से वो करीब 20,000 कॉलेजों को दिया है, वो है अटल टिंकरिंग लैब. यस, वो क्वाइट इजी है, वो आप अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा, कोई अप्लाई ही नहीं करता उसके लिए. अटल टिंकरिंग लैब. तो अटल टिंकरिंग लैब में क्या है, शायद बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है उसमें 1.5 लाख या 2 लाख या 2 करोड़ का ऐसे होगा, करोड़ में नहीं है, 10-20 लाख ऐसे ही कुछ होगा, 10 लाख एनुअली लेकिन होगा. लेकिन उसमें ठीक है, वो इसलिए है कि आप टिंकरिंग के लिए मान लीजिए कुछ AI/ML का जो भी कंज्यूमेबल्स होता है, ब्रेन्स खरीदना है, तो ब्रेन्स है, या फिर जो भी हम लगाते हैं रोबोटिक्स के लिए वो सब आइटम्स, मैं तो मैकेनिकल का हूँ, फिर भी वो सब के लिए वो लोग देते हैं, या टूल्स है, टैकल्स है, हायर एंड का जो भी खरीदना है वो आपको आपके ऊपर दे देते हैं. वो लोग कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करते कि आप क्या खरीद रहे हैं. दिस इज अप टू यू कि आपको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, केवल बिल उनको चाहिए कि आपने इतना सामान खरीदा है. उसके अलावा एक और है ACIC. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज को 3 रूपों में 3 इंस्टीट्यूशन दे रही है. एक तो दे रही है AIC, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरा दे रही है ATL, अटल टिंकरिंग लैब, और तीसरा दे रही है ACIC. ये ACIC का फुल फॉर्म एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, मिल जाएगा आपको नेट में. ACIC ये है अटल इनोवेशन इंटरनेशनल इंक्यूबेशन, क्या है मुझे पता नहीं. ACIC गूगल करेंगे तो मिल जाएगा ACIC. तो ये तीनों चीजों में ऐसा है कि कॉलेज को कुछ बर्डन नहीं लेना है. फाइनेंस बर्डन क्या होती है, प्रोफेसर के पास बर्डन है कि फाइनेंस का, कि आपको आस्क करना है डायरेक्टर से, फलना से, लेकिन ये गवर्नमेंट खुद ही फंड दे रही है. गवर्नमेंट केवल मांगती है कि इसको टेक ओवर कौन करेगा, CEO कौन होगा, कितने फैकल्टी मेंबर इसमें जुड़ेंगे, तो उनके लिए जो भी इंसेंटिव होगा उसका जुगाड़ गवर्नमेंट करेगी. वो अलग एडेड एडवांटेज है उसका. अच्छा, उसका तीसरा एडवांटेज है कि जो बच्चे वहां पे करेंगे उनको आप खुद ही इंक्यूबेट कर देंगे. जब खुद ही इंक्यूबेट कर देंगे तो इंक्यूबेशन ग्रांट के लिए जो पैसा आपके पास आएगा, आप अपने बच्चों को आसानी से दिला सकते हैं. तो बहुत सारे कॉलेज रखे हुए हैं, ये AIC रखे हुए हैं, ACIC रखे हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं लोग. और तो we will also now apply for same through this session. We will apply definitely. नहीं, आप अप्लाई करना चाहिए. देखिए, ग्रांट मिलना नहीं मिलना तो अलग जगह है ना. आदमी को अप्लाई करने में क्या आता है, कुछ नहीं आता है. अप्लाई तो कर ही सकता है. अप्लाई करते हैं तो आपके लिए मान लीजिए रिसर्च के लिए पैसे चाहिए होता है, कहीं टेस्ट ही कराना है, 5,000 10,000 रुपए लगते हैं, तो वो सब तो ग्रांट आसानी से हो सकता है ना, कि यहाँ पैसा पड़ा हुआ है, चलो हम इससे हमें रिपोर्ट करा रहे हैं, फिर पब्लिकेशन के लिए काम आ रहा है, ये आ रहा है, हो रहा है. तो बहुत सारे तरह के ईज हो जाता है, आसानी हो जाती है उसमें. यस सर, यस. और आपके बच्चों की आइडिया अगर सिलेक्ट होती है तो ये समझिए कि एक अलग मार्केटिंग माइलेज है. जो मतलब मार्केटिंग में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग की एडमिशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अगर आपके बच्चे कोई इनोवेटिव आइडिया सिलेक्ट होता है और नीति आयोग मान लीजिए आपको 1 करोड़ फंड कर देती है, तब तो उसको आसानी से भुनाएंगे आप मार्केट में कि मेरा बच्चा 1 करोड़ फंड मिला है, 1 करोड़ फंड मिला है, तो बच्चे आएंगे. नहीं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ. अचीवमेंट भी है और उस अचीवमेंट के थ्रू आते भी हैं. तो आज के बच्चों को स्टार्टअप के लिए प्रमोट करना कोई बुरा बात नहीं है, उनको प्रमोट करना चाहिए. और हम तो बोलते हैं 3rd ईयर से ही प्रमोट करना चाहिए. नौकरी मुश्किल है, नौकरी मिलने के बाद उसका टेंशन बियर करना मुश्किल है. टेंशन कम थोड़ा ना नौकरी करने के बाद भी. और अपना अगर वो स्टार्टअप शुरू कर दे,
एक बच्चों को बोलिएगा, वो मेरा ही बैचमेट्स है आईआईटी खड़गपुर का, उसका वेंचर नाम है एंटीनो, बहुत बड़ा हो गया है 3 सालों में। एंटीनो AITINO एंटीनो, ये अभी 3 जगह ब्रांच डाला है अपना, एक गुड़गांव में 2 और एक बेंगलोर में। तो स्टार्टअप क्या चीज होती है, इसके पास 900 एम्प्लॉय है, 900 एम्प्लॉय है। अभी हम दिल्ली गए थे, इससे मिलने गए थे, मेरा जूनियर ही है, मतलब खड़गपुर में ही थे। तो और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने इतना सफर किया कि इनको नौकरी मिली नहीं ढंग की, और मिली तो एकदम परेशान हो गए। और डायरेक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से थे, एमएससी वाला स्ट्रीम जो होती है उसमें थे, एमएससी केमिस्ट्री में आईआईटी खड़गपुर में। तो वो फिर साउथ अफ्रीका गए, वहाँ बहुत डेटा माइनिंग किया, फिर वहाँ से फर्स्ट ऑर्डर लेकर आए वो लोग इसके लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ से कंप्यूटर उतना डेवलप नहीं है, जोहान्सबर्ग केनिया उधर डेवलप नहीं है। और उसके बाद अभी जो भी सप्लाई करता है वो सब एक्सपोर्ट ही कर रहा है, ऐप डेवलपमेंट। केवल साउथ अफ्रीका का ही ऑर्डर है, इतना ऑर्डर है कि फुलफिल नहीं कर पा रहा है। 1 साल में 3 ऑफिस डाल दिया, गुड़गांव, नोएडा और बैंगलोर। We try to connect with him for our motivation session, because series of sessions are there na, so definitely we along with your guidance हम लोग उनको भी invite करेंगे हमारे sessions के लिए, and अच्छे हैं, मतलब understand all the things, what is the requirement and how to motivate, क्योंकि क्या रहता है, बच्चों को थोड़ा सा रास्ता दिखाना जरूरी है। नहीं, रास्ता दिखाना जरूरी है। हाँ, एक बार दिखा दिया तो फिर they will immediately connect। बच्चे को केवल खाली बूस्ट कर दीजिए कि तुम आजकल इतने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मार्केट में, कि उनको बोलिए कि तुम खाली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को खोज लोगे, क्या क्या पॉसिबल है आजकल और क्या क्या गैप है। उसके बाद आपसे मिले बच्चे तो आप उसको फिल्टर करेंगे, फिर खुद ही शुरू कर लेंगे। इनोवेशन और ये सब चीजों के लिए एक्सपर्ट तो है ही एक जगह, लेकिन शुरुआत तो प्रोफेसर के पास खुद ही एक एलिवेटेड ब्रेन होता है। मान ले किसी खास सेक्टर का नॉलेज नहीं भी हो तो कम से उतना ब्रेन तो है कि पढ़ के समझ जाए कि यहाँ पे है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्या है। यस सर। तो आप लोग खुद भी गाइड कर देंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लोग स्टेप रखते नहीं है, स्टेप रखेंगे 1-2 साल फ्रस्ट्रेशन होती है, लॉस होती है, सब कुछ होती है, लेकिन अगर स्टेप नहीं बैक करेंगे 1-8 साल तो सक्सीड हो जाएंगे। यस यस। संतोष सर, does there any other questions? Students, you can put in the chat box also. Yes, please. Yeah, hello. Yes, sir. हाँ, बोलिए। Yeah, sir. Just I want to know that if someone wants to start their entrepreneurship, then sir, how they can take instantly finance from any center? Yes. So there are 2 things in the center. One is called pre-incubation or one is called incubation. So if you have not registered any legal entity till date, and if you want to start a businesses and think I will later incorporate a business as a private limited company, then also you can go to the incubation center and tell them I want to register myself as a pre-incubations without registering private limited. They will register you, and you can also pitch over there and ask for money. I need just simply 1 lakh, 2 lakhs, very little amount. So as to I can register my company and set up my office, purchase tables, one system, very low amount. So they can give you easily. Sir, this amount is payable on interest or sir without interest? No, generally till date interest, if they count interest, the interest will be lower than the repo rate. That is the rule. Okay, sir. If they count interest, if they count interest, even then the interest will be lower than the repo rate. Okay, sir. The second question is, sir, if I will just start my idea, and the second step is, sir, when I'll just starting, then sir, where I will register my company? You can consult to any CA. ठीक है, CA is authorized or lawyer is authorized. ठीक है, you cannot register a company. ठीक है, company registration under the Company Registration Act, these 2 fellow are authorized to register a company. Either you have to go for CA or you have to go to a lawyer. But I suggest you to go with the CA. Okay, sir. I was working, sir, Tata Steel as a purchase manager, but sir, I
not find, sir, someone those are getting a big purchase order. Suppose, sir, someone got 1 crore or 2 crore orders, but they are not getting any financial help through from bank. Some vendors. I'm talking about some vendors. But sir, I got your point. You want to tell that someone is doing a business with the Tata Steels and they are dealing in crores of crores, but still they are not getting any kinds of fund from the bank. Am I true? Yeah, yes, is this sir. Your question? Okay. Yes, sir. So yes, obviously, a bank will not give you the loans. They will check your credit card score or they will go for the collateral. Okay? So you cannot register yourself as a incubator. Second thing is that to getting a fund through a Niti Aayog, your company should not be registered or should not be older than 2 years. If you have registered your company prior to 2 years, the government will not going to fund you. That is third clause. Okay, sir. So सर नीति आयोग जो भी आप स्टार्टिंग के फंड होंगे वो पे कर सकते हैं आवर क्रेडिट के बेसिस पे. हाँ, ट्रेडिंग के बेसिस पे नहीं करेंगे, वो ट्रेडिंग पे करेंगे ही नहीं. जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस होगा उसमें करेंगे ही नहीं. ओके. नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब कि ऐसा कोई बिजनेस आइडिया जिसमें इनोवेशन हो, केवल वही फंडिंग करेगी नीति आयोग, बाकी कहीं नहीं करेगी. इनका सर मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या होगा सर? मैक्सिमम 20 करोड़ तक तो फंड किया है, हम लोग देखे हैं 20 करोड़ तक. तो सर मिनिमम 10 लाख. ओके सर, 10 lakhs to 20 crore. ये सर इंटरेस्ट दे आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन दैट. देखिए, ये इंटरेस्ट अगर लेंगे तो रेपो रेट के नीचे लेंगे, मतलब 5% 6% लेंगे अगर लेंगे तो. ठीक है. नहीं लेंगे तो इक्विटी लेंगे, और वो भी नहीं लेंगे तो ग्रांट दे देंगे, दान कर देंगे. ओके सर. ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो बेंच के सामने आप जो पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग भी बैठते हैं एक्सपर्ट के रूप में, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको डेब्ट देना है, इक्विटी देना है कि नहीं देना है. तो वो उनका अथॉरिटी है. अगर आपका पिच में लगेगा कि नहीं ये पूरा कचरा की तरह बोले पड़ा है, कुछ है नहीं इसके पास, ये फ्यूचर भी नहीं कुछ बनाया है, कुछ का कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है, तो रिजेक्ट कर देगी. ऐसा कुछ नहीं कोई भी चला जाएगा सब लोन उठा लेगा तो सबको तो लोन मिल जाएगा, तो बचेगा कौन देश में कमाने वाले का? सब लोन लेके जी लेगा. तो देखता है वो लोग, चेक करता है. अब ऐसा है तो आप हमको पिच भेज दीजिए, हम देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. क्या है, ठीक है, हम लोग भी उसको फॉरवर्ड कर देंगे. ओके. और सर एक चीज और जानना चाह रहा था कि सर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो मोदी जी स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किए थे, तो उसमें सर उन्होंने स्टार्ट में बोला था कि कुछ फंड वो अपने पीएम फंड से देंगे, तो ऐसा अभी कुछ वो कर रहे हैं क्या? पीएम केयर फंड का मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वहां से कोई नेटवर्क नहीं है इसका, नीति आयोग के फंडिंग का. वो दोनों अलग संस्थान है, उससे कोई संपर्क नहीं है. उनका कोई अलग स्कीम होगा. स्किल इंडिया से सर, स्किल इंडिया भी अलग स्कीम है. स्किल इंडिया भी अलग स्कीम है. ओके सर, वो भी अलग स्कीम है. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. और कोई क्वेश्चन है? Any other questions? I think संतोष सर पूछ लिए सर ने भी questions collected. संतोष, is there any question from auditorium, or we will wind up the session then? Sir, it's maybe the questions are there with us, but unable to speak right now. So okay. I will note down and reconnect with you personally. Okay, with the help of Santosh sir also. We definitely, as a emerging engineering college. Yes, yeah. Is there anyone who wants to ask? No, I think. No. So, so thank you very much, sir, for your presence and guidance. बहुत अच्छे से आपने हमको गाइडेंस दिया, आपकी स्टोरी भी मोटिवेटेड है, एंड डेफिनेटली योर सेशन सेकंड सेशन इज देयर on 13th February, so we will reconfirm it.
with the proper through. Meanwhile, design thinking and that parts we need to miss. My request is to how to design, what are the steps we need to follow to start any business, or basic steps. Correct. What exactly we need. क्योंकि क्या है ना सर, स्टार्टअप सभी बोलते हैं, इनोवेटिव आइडिया सबके पास रहती है, बट वो इनोवेटिव आइडिया है या नहीं वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग, नहीं कर पाते या सो वहीं पे यानी रहते हुए भी वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि भाई ये हमारा कुछ तो भी अलग है, वन स्टेप अहेड है या बैक में है, या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वी कैन गो. सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट थ्रू दैट सेशन वी विल यू गाइड अस अबाउट द दैट पार्ट्स and we try to reconfirm it, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा लेक्चर का स्लॉट रहता है हमारे बच्चों का, सो वो कंसीडर करके we will cover up all the parts and we try to keep it on the hybrid mode. जैसे आज हम लोगों ने ऑनलाइन रखा था, but some maximum students attend it through the auditorium, so we try to do like that. So thank you very much for your valuable time and supports, and it is a really very nice and motivating session for us. Thank you very much on the behalf of thank you all teams, and thank you Santosh also. Yes sir, the Santosh sir efforts are more behind it. Thank you. Thank you very much. Thank you so we are leaving the session. Yeah, if you are done, some students are already there, so I will reconnect with them and okay. Thank you sir, thank you very much. पंकज, तुझ्याकडनं क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते मला. पंकज राय, आर यू देअर? पंकज.